बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जाहिद ने कॉल किया था और जाहिद ने कहा कि तारिक भाई मैंने 10 ईयर लॉ पे 10 ईयर बेसिस पे अप्लाई किया और उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील दी और मैंने अपील कर ली और मैं वेट कर रहा हूँ कब मेरी अपील आएगी। और जो रिफ्यूज़ल मुझे 10 ईयर की बेस पे हुआ था वो टोइक की बेस पे हुआ था, बिल्कुल टोइक की बेस पे उन्होंने कहा हुआ था। और मैंने फिर जाहिद को बोला था कि आपने जीआर क्यों नहीं किया, तो ही थॉट के जी चल एनीवे मैं उस डिटेल में जाता, लेकिन मैं थोड़ी सी सिचुएशन आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जाहिद जैसी पोजीशन में हैं और वो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। नॉर्मली होता है कि जब आप 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस पे अप्लाई करते हैं तो वो देखने में आजकल आया, जो कि अच्छी बात है कि होम ऑफिस वाले आपका जब रिफ्यूज़ करते हैं तो आपको शायद राइट ऑफ अपील भी दे रहे हैं अंडर द ह्यूमन राइट्स। तो मुझे नहीं पता जायद कि आपका केस उसी प्रोविज़न में, लेकिन प्लीज़ अपने कागजात जाके चेक कर लें। मैं अज्यूम करता हूँ कि जो उन्होंने आपको राइट ऑफ अपील दी है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर दी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इशू बता दूँ। टोइक की बेस पे जब वो रिफ्यूज़ करते हैं तो मोस्ट लाइकली कंड्यूसिव टू पब्लिक गुड की बेस पे रिफ्यूज़ करते हैं, यानी कि जो 322 इमिग्रेशन रूल्स हैं उनमें से कोई एक आप पे लगाते हैं, चाहे वो डिसेप्शन हो, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो या कंड्यूसिव टू पब्लिक गुड हो। और इमिग्रेशन रूल के तहत कहते हैं कि जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल में आता है, आपने हमारे साथ डिसऑनेस्टी की है और हम आपको वीज़ा नहीं देते। जब वो राइट ऑफ अपील देते हैं और आप फर्स्ट है ट्राइब्यूनल में जाके अपील करते हैं तो वो याद रखें ह्यूमन राइट के ऊपर अपील है, वो इमिग्रेशन रूल की अपील नहीं है, वो ह्यूमन राइट की अपील है। उसकी जो प्रोविजंस हैं, उसकी जो तरीका है डील करने का वो थोड़ा डिफरेंट है और वो थोड़ा सा इशू रेज होगा आपके लिए अगर आपकी एप्लीकेशन इमिग्रेशन रूल से रिफ्यूज़ हुई है कि जी ये डिस्प्रपोर्शनेट था ह्यूमन राइट्स के ऊपर, क्योंकि वो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। उसका भी एक तरीका है, लेकिन जो प्रॉपर मेरी नज़र में रेमेडी थी आपके पास, अगेन मैं जायद स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं कर रहा बिकॉज मैंने आपका केस डिटेल में नहीं पढ़ा, बट वो है जुडिशल रिव्यू, यानी कि अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई डिसीजन देता है और इमिग्रेशन रूल के तहत वो डिसीजन गलत है तो आपको अगर उसने कोई और रेमेडी नहीं दी लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, क्योंकि आपके पास वैलिड वीज़ा है, तो आप जुडिशल रिव्यू का जाके दरवाज़ा खटकाएं और बोलें कि जी इमिग्रेशन रूल के तहत मेरी नज़र में ये डिसीजन गलत है। आप अभी चले गए हैं ह्यूमन राइट के ऊपर। अब फिर बात आ जाती है कि विंडो कितनी थी जुडिशल रिव्यू में एप्लीकेशन डालने की, वो 3 मंथ फ्रॉम डिसीजन होती है। तो सारी बात है कि वेदर यू मिस द विंडो, वेदर ह्यूमन राइट के ऊपर आप किस तरीके से कवर, एक तरीका है फिर भी ह्यूमन राइट के ऊपर कवर करने का ये टोइक केसेस को, लेकिन वो बड़ी लॉन्ग शॉट है। बेहतर ये था जनरली लोगों के लिए कि एडवाइस लें और मोस्ट लाइकली उनको एडवाइस यही मिलती कि जी इसको जुडिशल रिव्यू एक्शन के थ्रू चैलेंज करें अगर आप समझते हैं कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया है। ह्यूमन राइट का एलिमेंट बेशक परस्यू करें आप कोर्ट के अंदर, लेकिन इमिग्रेशन रूल के एलिमेंट को भी आप ना छोड़ें, बिकॉज अभी आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपका केस रिफ्यूज़ किया इमिग्रेशन रूल में, ह्यूमन राइट में, आपने ह्यूमन राइट उठा के अपील कर दी, इमिग्रेशन रूल को वहीं रहने दिया। आपको या तो मेनली इमिग्रेशन रूल को जाके चैलेंज करना चाहिए था जो कि अपील ना होती, जुडिशल रिव्यू होता, या इमिग्रेशन रूल एंड ह्यूमन राइट दोनों को उठा के आप आगे लेके चलते हैं। तो वो मैं बड़े सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे क्या एक्शन होना चाहिए वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन जितने भी लोगों के टोइक के रिफ्यूज़ल हुए, मैं एक बात उनको बोलता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको भी बोलूँगा कि पहला रिएक्शन आपका टोइक पे होना चाहिए कि होम ऑफिस से डॉक्यूमेंट मांगें, और जो आपका कॉलेज है जहाँ आपने टेस्ट दिया है, अगर आप बेगुनाह हैं ऑफ कोर्स, उस प्रजम्पशन से मैं चल रहा हूँ कि आप उनको चैलेंज करें, उनसे बोलें कि जी बताएं क्या एविडेंस है आपके पास कि मेरा टेस्ट जेन्युइन नहीं है। काफ़ी लोग पीछे हो जाते हैं, वेट करते हैं कि हाँ जी हमने अपील कर दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जब मैं उनसे मुड़ के पूछता हूँ अच्छा आपने होम ऑफिस से कोई रिकॉर्डिंग मांगी, आपने टोइक वालों से ईटीएस से कांटेक्ट करके कोई रिकॉर्डिंग मांगी, आपने जो कॉलेज जहाँ आपने अपना टेस्ट दिया था उनको कांटेक्ट करके बोला कि भाई ये क्या हुआ है, क्यों ये बोल रहे हैं सारे कि मैंने जो आपके टेस्ट सेंटर में आके टेस्ट दिया था वो अब जेन्युइन नहीं है। किसी ने ये हरकत नहीं की होती, और ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की थी जज ने उस मेन कोर्ट ऑफ अपील के केस में, जिसका सारे आप कोर्ट करते हैं टोइक में, कि जो एक्शन है बंदे का वो भी बड़ा मैटर करेगा। तो अगेन जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये सारी बातें मैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे बोलता हूँ शो के अंदर, प्लीज़ डोंट टेक दैट एज स्पेसिफिक एडवाइस। लेकिन क्योंकि टोइक का मसला बड़ा कॉमन है इस वक्त मार्केट प्लेस में, तो मैंने कहा थोड़ा सा उसका मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में थोड़ी दे दूँ। बट थैंक यू सो मच आपके कॉल का जायद। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो
Hello. Yes, Hiya. I'm so sorry. I've got two questions to ask. If yes. you could help me with that. It's regarding one of my friends. They came from Pakistan due to a family feud regarding their marriage. They had a love marriage. Mm-hmm. They fled to Saudi, stayed there for about a year, and then they went back to Pakistan trying to get everything sorted out. Nothing got sorted out, so they came to the UK in 2008 Mm-hmm. as a visitor. Mm-hmm. Obviously, they stayed over because they had no choice. Yeah. Since then, they've been here. They've been misled by many people to do different things. Now, recently, we went to a local solicitor who advised them to wait until this end of March because there might be some kind of M&ST passing because they've been here for nearly 10 years. It might help them in some way. I'm not too sure. If you could tell me what they could do regarding that, if they can put in a case that they've been here for 10 years. Secondly, where they were staying at a friend's house, they were paying cash in hand. They came to see me for a few days. Now they've gone back to the where they were staying, where they have all their belongings. The landlord has actually changed the locks and everything, and is refusing to give their belongings to them. They're a bit scared of getting the police involved because they think, well, we have no status here. If we get the police involved, we might get, sent to the immigration or deported or whatever. That's another thing I want to ask. Can they ask for help? Because all they've owned in the past 10 years has just been taken away from them, which is not fair. If you could just answer those two questions. They've been here for 10 years. What can they And, do? and, and can I ask you a quick Secondly, question before you go? yeah, My sorry. apologies, I'm just speaking over you because, as you know, the format is squeezed in. That's But okay. do they have any children in this country? No, they haven't. Or they No, haven't? All right. I'll do they my have no best to children. answer both the questions you've raised. And again, this is not advice, this is information, so please take it as an information I'm giving you. Now, first of all, I understand you said they've come here and they are claiming asylum, probably because they're saying their life isn't fair. They have fear of their life, and they're saying the reason is family feud. And I don't know if they've tried to claim asylum, whether they were successful, not successful, but from my experience, I can tell you that claiming asylum or protection in this country, husband and wife, on the basis of family feud, the chances are very, very, very low. I haven't looked at the case, so I cannot give you specific advice information, but I'm generally telling you that on family feud basis, the bar is really, really high. Because I'll tell you the reason why. Because if you're saying the people who are after our life, because our life is in danger because of family members or etc., they are non-state agents. When non-state agents are after you, you have to show that there is no sufficiency of state protection, meaning that you went to the state, meaning the police, the judiciary, and they did not help you. Saying that they are very influential, they have MPs, MNAs living in the family who can influence the police is not good enough. This is just a generic observation I've given you. So as far as their case under protection, asylum, the chances are, I'm not saying zero, but very, very low. I don't know when they went to see lawyers who specialize in immigration, what kind of advice they've been giving them, and I'm pretty sure that most of them would have turned around and said to them that their probability of then succeeding on these grounds are quite low. Or at least when they read the case, they would have said that to them. Again, because I do not know the details of the case, I'm giving you a very generic information. So please don't say that if I'm saying low after reading the paper, somebody said, oh no, it's high, I don't know what that guy was talking about, then my apologies. But I'm talking about in a generic view, these kind of cases, the probability is low because the bar is very high. Now, we'll come to the second portion. And yes, a lot of people who are illegal in this country are being exploited on work, on rent. Yes, it will be a civil matter. Yes, the police may come in because you could say he's not giving up possession, and the police may turn around and say, well, go to court and try to challenge it. And yes, once they find out, the police, that they do not have legal status in this country, it is, yes, likely, I wouldn't say highly likely, but very likely that they would contact the Home Office and they would be asked to report, and in a very, you could say,
in a very, if the luck is bad, then yes, they could be detained as well because they don't have any children. So the possibilities are there, and that is why these people who are overstays are quite vulnerable, and unfortunately there is no regime in place to safeguard their or to protect their rights, because at the moment, as far as the authorities are concerned, they have absconded. They are not in contact with the authorities, so as far as they are concerned, they're already in breach of their, you could say, a breach of their leave to any visa condition they ever had, which in this case would be visitor visa. Yes, that is an immigration breach, nothing to do with criminal breaches or civil breaches, but yes, the police will then contact, and this will indirectly have an effect on whether they can call the police or not. So that's a decision they'll have to make. But as a friend, if you're their friend and they've been living here for 10 years, let me say something to you, because I've been in this line of work for some time. I do advocacy, so let me give you some good information. I won't use the word advice because the show is not for that. If you're a good friend, then turn around and tell them that please do not waste your life in this country. Go back where you come from, go live in another country, or try living in a separate state in Pakistan and be happy. Because one thing I say to everybody is, life is very short. You have your 20s, you have your 30s, you have your 40s, and then before you know it, you're playing your last innings in this world. So please enjoy your life. Don't worry about, I see people, especially students, I see people like this, 8 years, 9 years, they should be happily married, living in their home country, enjoying their life. Instead, they're running around, working 14 hours a day on a minimum wage. I mean, I wouldn't even call that minimum wage, 20 pounds, 30 pounds a day. And then they're going home, they're not happy because they work 16 hours, they're not enjoying their life. For what? And this is why I asked if they had any child, because if you go to somebody who's specialized in immigration, they can immediately tell them what scope do they have in this country, because the new law is if you've been here for 20 years, then you can apply on private life, or if you're under 25 and above 18 and you lived half your life here. Now, if you haven't done all that, there's no way of living your life to look forward to another 20 years of absconding in this country, hoping that the law would remain by then and you could be legalized here. So please, as a friend, you need to have intervention with them and give them the right advice. Now, as far as, yes, there was some talk, because bless him, George Sponson, he does come in our from time to time, and he once made the observation some time back that why don't all the people who've been living here illegally, let's legalize them and start all over again. A bit like the amnesty they offered in the early days, but a lot of MPs turned around and said, no, that's not going to happen. So it's very unlikely that may happen. Then again, because of Brexit, anything can happen, but you can't wait there and you hope for something like this. You might as well buy the lottery ticket and hope you get the lottery numbers. My apologies. I didn't want to put a very gloom picture for you, but I think if they are your friends, they've already wasted their 10 years in this country, you need to give them some good advice in life and tell them to move forward. मुझे बताया जाता है कि हमारा टाइम भी हो गया शो का. मैं माजरत खाऊँ, आज हमने 2 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लेट शो शुरू किया था, और मैंने सवाल जवाब जितने मैं दे सकता था मैंने दे दिए. एज़ आपको पता है कि शो का फॉर्मेट अब ये हो गया कि मैं फोर्टनाइटली शो करता हूँ, तो मैं एक वेडनेसडे मिस करता हूँ और एक वेडनेसडे को मैं शो करता हूँ. तो उस वजह से जो अब हमारे अप्रैल में शो होंगे वो 5th of April होंगे एंड 19th of April होंगे. सो यानी कि जो हमारा अप्रैल में पहला शो होगा वो 5th April को होगा इंशाल्लाह, और जो अगला शो होगा वो 19th April होगा. एंड ऑफ कोर्स अगर कोई चेंजेस होती हैं हम बता देते हैं आपको वीनस टीवी के थ्रू, बट दिस इज़ व्हाट द डेट्स वुड बी. अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बी सेफ आउट देयर, एंड आपसे मुलाकात होगी 2 हफ्ते बाद. अल्लाह हाफिज़.